Are we ready for India? India, India, India. Yes, आज है वो big final. Yes, it is a big final because let's be real. As much as SAF Championship we are defending, this time it is going to be different. अगर हम जीत जाए, hopefully हम जीते. All the momentum is with India. I would say after the semi-final win, but it's against Kuwait. Kuwait or Lebanon were the invites. They were two invited teams. Remember. तो भाई इस बार the stakes are different. हाँ, don't get by fooled by Kuwait's ranking. Kuwait's ranking is 141 versus India's 100. लेकिन Kuwait, remember, they were not in FIFA in terms of being officially a part of for some time, couple of times. तो उसके कारण they went down the rankings. तो भाई हम देखेंगे उस फाइनल के बारे में. What is it that we need to speak about? Of course, and of course it is the first interview of Mauricio Pochettino. क्या बोला उन्होंने, plus some transfer news जो हम करते हैं daily anyway. So hit that like button, do not forget to subscribe. Always a fan channel for all to see. लेकिन starting with the SAF championship final भाई जो हो रहा है मेरे ही टाउन में, Bangalore में, and yes, for people out there, I have the tickets and I should be there, and hopefully I bring you some content, be it on Instagram or on YouTube. So follow us on social media as well. The links are always below. तो भाई देखिए, कुवैत कहीं ना कहीं दैट ग्रुप स्टेज गेम 1 week अगो विल बी रिमेंबर्ड. ठीक है, 1-1 हुआ था. इन द एंड इट वाज एन अनवर अली ओन गोल, द ओनली गोल जो इंडिया ने कंसीड किया इस टूर्नामेंट में. बट रिमेंबर, कुवैत हैज डन वेरी वेल इन द टूर्नामेंट, और दैट वाज द रीजन व्हाई कुवैत ने टॉप किया था ग्रुप स्टेज, एंड दे आर डिजर्विंग फाइनलिस्ट एज वेल. सो कैन नॉट बी टेकन लाइटली. कहीं ना कहीं आई वुड से दैट इंडिया का पलड़ा फिर भी भारी होगा. Because in that group stage match, बहुत ही heated match था, especially in the second half. I remember again Igor Stimac got sent off, और यहाँ पर बोला गया है that he'll be missed 2 matches, so not just the semi-final which he missed, he'll be missing even the final. तो कोई नहीं, we have Manesh Gawli on the sidelines, that's enough. Of course, along with Sir Sunil Chhetri on the pitch, and who could be better doing it for us. 92 goals and very close to 100. Let's see if we can get to maybe a hat trick at 95. I know बहुत ज्यादा expectation है, but क्या खेलेंगे भाई ये मैच. इन माय ओपिनियन इट विल नॉट बी अ केजी मैच पर से, लेकिन देयर इज अ चांस कि कैंसिल आउट हो जाए ईदर टीम, और क्योंकि दोनों ही टीम्स खेलती है ट्रेडिशनल 4-2-3-1, एंड दैट इज समथिंग दैट अ पॉसिबिलिटी है दैट इंडिया माइट नॉट एक्सपेरिमेंट. व्हाई? बिकॉज इवन इन दैट ग्रुप स्टेज मैच आई थिंक वी प्ले दैट वे, और हमने अच्छा खेला था. कहीं ना कहीं वी शुड हैव स्कोर्ड दैट सेकंड गोल, बट if not for the own goal, वो होता एक victory and we would have topped the group. But nevertheless, we are in the finals. Doesn't matter. Okay. यहाँ पर in terms of news, obviously we are missing Rahim Ali. Remember, he also got sent off in the match against Kuwait, if I remember right. लेकिन I think Kuwait, they have everyone, if I'm not wrong. हाँ, 4-2-3-1 में कुछ चेंजेस देखते हो इंडिया के लिए? नहीं. मतलब इट विल बी गुरप्रीत इन गोल. यस, अमरिंदर हैज प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट, लेकिन कम ऑन, आफ्टर वो सेमीफाइनल के एक्सप्लॉइट के बाद में यू विल हैव टू प्ले गुरप्रीत, ऑफ कोर्स, राइट. तो आई वुड डेफिनेटली प्ले द बैंगलोर guy, but along with that I think you have to give it to Nikhil Pujari यार. Being a winger, he played very well at the right back position, और आकाश मिश्रा भी. तो full backs, big up to them. But Sandesh is back, bro. The wall, he is back. Sandesh Jingan, again ex Bangalorean यहाँ तो, लेकिन yes, Anwar Ali, brilliant combination. Midfield में 100% no two ways about it. I will see Anirudh Thapa and Jeekson Singh. बहुत ही अच्छा खेले दोनों ने. I think कहीं ना कहीं, I think I know Rohit was there, but I would say Jeekson is just about cemented his spot in the Indian team. Definitely मैं बोलना चाहूंगा. No bias there for Bengaluru भाई. लेकिन Sahel Abdul Samad, the guy, the main creator of India is him. Let's be real. Along with Changte, of course, on the right wing और left wing में महेश सिंह ने बहुत अच्छा किया है. कहीं ना कहीं I am a Liston fan, I won't lie. Liston Colasso is something that I expected to have more appearances, but of course also आशिक यार, मतलब there is quite a possibility of a change अगर रहता है 0-0 से at the hour mark. But हाँ, obviously सर सुनील छेत्री up top. और कुवैत का क्या डेंजर है भाई? डेंजर है आई थिंक 3 पोजीशंस इन पर्टिकुलर. एक है विंगर यार, उनका जो विंगर है ना भाई, मुबारक अल-फनीनी, ब्रिलियंट विंगर. Him versus full backs of India will be one of the key battles. आप लोग भी बोलिएगा आपका की बैटल क्या रहेगा. I think of course सर सुनील छेत्री को कैसे वो ड्रॉप करेंगे is what I would say. So I would say Khaled, Ebrahim, their center back is proper tower है. तो that is not going to be easy, जो हमने देखा ही था in the group stage match. But midfield में अगर हमारे पास अनिरुद्ध थापा है,
who is brilliant on the ball as well as basically someone who changes defense to attack. They have an Ali Matar as well. तो कहीं ना कहीं their midfield is also not too weak. तो मुझे लगता है prediction पर आ जाते हैं, I would say that it can be a little bit of a match जहां पर बहुत ही battle देखने को मिले, but the odd mistake will get a goal, and I am saying it as a 2-1 victory to India in extra time. हाँ, जो extra time से आई थी final में Kuwait, I think it'll go to extra, but this time we will win it. So I am ready for it. A long match at the Kanteerava. Bhai, are you coming with me or not? लेकिन either ways we will be back with the content. But भैया इंडिया का तो बात कर लिया absolutely, और hopefully we win. What about Chelsea? Yes, Mauricio Pochettino. He has just completed his first interview, and what an interview. हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा, I was not as excited as many as social media जब वो इंटरव्यू आने वाला था. Absolutely. क्यों? क्योंकि भाई बोलना एक चीज होता है, करना एक चीज होता है, लेकिन फिर भी भाई नया मैनेजर आ रहा है. आफ्टर अ वाइल दैट वी आर फीलिंग दैट ओके इट्स अगेन अपवर्ड ग्राफ होने वाला है होपफुली. एंड आई थिंक आफ्टर लिसनिंग टू द इंटरव्यू मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ, क्योंकि आई बिलीव द मेन थिंग दैट इज स्पोक अबाउट was I think दो तीन चीज स्टैंड आउट से. मैं पूरा इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग was that he was stressing on win. We are one of, or rather the most successful club in England in the last 12 to 15 years, और मैं तो बोलता हूँ भाई 20 years में भी, मैं बोलूंगा 20-25 years में भी, we are one of them for sure. But at the same time, it's not just about winning. We want to win in a way that fans like, and that's very important as well for the long term. Agar fans have to believe in Pochettino and team, and that is something that is needed. वो एक साथ में रखना चाहते हैं पूरे टीम को. He will probably have the squad trimmed down. वो clear लग रहा था, अभी तक हुआ नहीं है उन्होंने बोला, but he's looking at basically everyone having a role, or it's a proper team sport, or your team spirit, people who want to be here. Yes, was key in his interview, in my opinion, and that is something that winning the fans over again, getting them the feeling, a pride feeling again, as well as us winning the bottom line. Absolutely, oh, absolutely, the things you want to hear. No two ways about it, right? Like, and again, एक कॉमेडी एक इंसिडेंट भी होता. आई थिंक वाज ऑन हिज वे टू कॉबम एंड ही मेट अ फैन, एंड फैन भाई अपने आप से ही जर्सी से फोटो ले रहा है कैमरा के साथ, लेकिन भाई उसने बोला भाई तुझे लाइमलाइट चाहिए कि तुझे मेरे साथ फोटो लेना है. पॉजिटिव ने बोला, जो जो रुके थे भाई उसके लिए. बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स. ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूंगा भाई हमारे पास आ गया है पेप गार्डियोला काइंड ऑफ मैनेजर. नो, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट. लेकिन हाँ, ऑपोजिशन फैंस आप लोग भी बोलिए इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पोर्चुगल टीम. आई एम हियरिंग द राइट थिंग्स, बट होपफुली दे वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. और एक और चीज मैंने मिस कर दिया भाई, ही वाज स्ट्रेसिंग ऑन द लीडरशिप डिस्पाइट द यंग एज. तो लगता है द स्काउटिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इज नॉट जस्ट अबाउट यंग एंड वाओ प्लेयर्स, बट आल्सो अबाउट लीडरशिप. टॉक अबाउट दैट. भाई चेल्सी ने एक और यंगस्टर साइन कर लिया है ऑलमोस्ट. भाई रोज ही होने वाला भाई. आई थिंक मैथेउस फ्रांसा इज द नेम. Again, एक और Brazilian, someone who has been scouted by many teams in the past, just like Angelo Gabriel हमने किया था 3-4 दिन पहले. Again, someone who plays in behind the striker or a cam or say a central midfielder. काफी ऐसे प्लेयर्स हमने साइन किया है, मतलब इस इल्क के ही बेसिकली. ब्राजील से 3-4 कर लिए भाई, साउथ अमेरिका से ही 7-8 कर लिए ऑलमोस्ट. भाई लुक्स लाइक इट देयर विल बी अ प्रॉपर कंपटीशन कम द फ्यूचर इयर्स, एंड जो भी नहीं स्टेप अप किया विल बी सोल्ड मे बी एट पार और एट प्रॉफिट. बट ये लोग सब सस्ते में नहीं खरीद रहे. अपन अब अपन खरीद रहे इन द 15 to 20 million euros range, and we are not buying in 5 to 10 million euros range. So there's a difference. So कहीं ना कहीं गैम्बल है, बट वी आर होपिंग दैट इज नॉट फ्रॉम द बजट फॉर द मेन प्लेयर्स. देखते हैं यार क्या होता है. बट टॉकिंग अबाउट मेन प्लेयर्स, अब्दुल रहमान बाबा रहमान फाइनली टाटा बाय बाय बोल रहा है यार, जस्ट लाइक बाकायोको, बहुत सालों के बाद में. वन ऑफ द मोस्ट एज एन लॉन्गेस्ट प्लेयर्स जो चेल्सी के बुक्स में रहा है इन रीसेंट टाइम्स एटलीस्ट. लेकिन अगेन फेयर पॉइंट, ही हैड टू end his contract and go. ग्रीस जा रहा है, तो all the best to him. Thanks for coming on, और कहीं ना कहीं wearing the Chelsea jersey, but Ghanaian, I think he can probably get more elsewhere, to be very honest. And let's be real, हमारे पास है काफी लेफ्ट बैक ऑलरेडी. अच्छा, तो meanwhile talk about signings and new players. Manchester United, wow, this is news. अमराबात looks like वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकता है. हाँ, हम फ्योरेंटीना के डायरेक्टर ने बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स सेइंग दैट अमराबात टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एट अ कट प्राइस डील इज क्वाइट पॉसिबल. हाउ डू यू रेट दैट ट्रांसफर? मुझे लगता है इट्स अ माइटी ट्रांसफर. व्हाई? बिकॉज
हाँ, ही माइट नॉट बी अ स्टार्टर, क्यों? क्योंकि दे माइट प्ले अ 4-1-4-1 और अ 4-3-3 विद मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस इन अहेड ऑफ कैसेमिरो, लेकिन कैसेमिरो का बैकअप के लिए अच्छा है. हिम एंड मैकटोमिने आर बैकअप्स विद फ्रेड बीइंग सोल्ड, लुक्स लाइक इट. तो अगेन आप लोग रेट करोगे तो क्या रेट करोगे इस ट्रांसफर को? आई वुड से डेफिनेटली स्माइटी, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड भाई. आई नो कहीं ना कहीं बारसा और चेल्सी वर वांटिंग हिम इनिशियली, but in the end he's going there. I would say he would have not been a very bad signing for Arsenal as well, considering Declan Rice जो हुआ नहीं उसका बैकअप हो सकता है. बट सिमिलर मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी का मैं देख रहा हूँ मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ जो खेलेगी 4-3-3 और 4-1-4-1 हो सकता है इस बार. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो. बट हाँ, अभी के लिए इतना ही है. अगेन इंडिया, आई होप एंड प्रे दैट दे विन. इट विल बी अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, फुल हाउस है भाई कंटीरिया में, तो होपफुली यू नो चीयर फॉर अस एज वेल एज फॉर इंडिया ऑफ कोर्स, बिकॉज वी विल बी देयर नो मैटर व्हाट. बट ऑफ कोर्स चेल्सी के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी है, नर्वस एनर्जी भी है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन होपिंग द राइट थिंग्स एंड मोर ट्रांसफर न्यूज टू कम. ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर सी, लव यू ऑल एंड इंडिया इंडिया.